Hi there, this is Ubaidullah, and today we are going to start the new chapter, that is chapter number 5 in the book of Standard 10, and the chapter is the 100 dresses. There are actually two parts of this chapter, so this is going to be the 100 dresses part 1, and because this is the first video of part 1, so it is 1.1. Okay, so in this chapter we are going to learn in detail what is there in the chapter. So we are going to analyze the text, we are going to understand the text in this chapter. So let's get started. Today, Monday, Wanda Petnowski is not in her seat. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. So what this paragraph says? It actually says that Wanda Petnowski is not in the class today. And she is absent, but nobody noticed her absent. The girls that were making fun of Wenda Badnowski were also, you know, they did not notice as well. Then it has been told that where Wenda actually sits in the class. So Wenda used to sit in the class in the last row. If you notice, there is a sequence, and it is the same sequence that is used for telling or informing the address of somewhere. So the smallest unit, we start telling the address with the smallest unit. So here we see that the uh, the seat on which vendor sit has been mentioned first. For example, if you are telling somebody your address, you will say that house number. Okay, then you will tell the building name. Okay, when then you will say that which road to use to reach there. Then you will say if there is any other landmark or bank or any other such thing that you can use at landmark. यहाँ पर आइए, then afterwards you reach to that road, and on that road you will find that building. So you start with your home, the apartment or the place you live, then the building or the place around you, then the road, then the landmark, then you say that in which city you live, then you say in which state that city falls. Okay, if you are giving address for some international purpose कि आपको कोई बाहर से कोई सामान वगैरह मंगाना है, तो you also mention your country as well. Okay, so here as well you see that exactly where vendor sit. Vendor sat in the seat next to the last seat. Okay, लास्ट सीट के बराबर वाली जो सीट थी उसमें वो बैठती थी. वो लास्ट सीट कहाँ पर थी? वो लास्ट सीट जो थी वॉज इन द लास्ट रो की लास्ट सीट के बराबर वाली सीट पर वो बैठती थी. ओके, और ये लास्ट रो कौन से वाले रूम में थी? इट वॉज इन रूम नंबर 13. तो जैसे जैसे हम एड्रेस बताते हैं, असल में हम स्मॉलेस्ट यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं. सबसे छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हम एड्रेस बताते हैं. तो वो सीक्वेंस जो है यहाँ पे फॉलो किया गया है. आप भी किसी को एड्रेस बताएं या एड्रेस लिखें तो इसी चीज़ को हमेशा फॉलो करें. ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैं मुड़ासा में रहता हूँ, या मैं फला जगह रहता हूँ, ओके, या मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, और फिर आप कहें कि मेरा घर यहाँ पर है और घर का नंबर ये है. यू स्टार्ट विद द हाउस नंबर, then building, okay, if you have any building name, and then the road or anything that is bigger than that. Okay, now the characteristic of the place where she sits. Okay, she sat in the corner. So actually most of the times you will find that the back row of the class is actually of students who are not very
good at study. In most of the school now we see rotation system. Okay, the rotation is being utilized, so the student sitting on the last bench, will come in front one day or the other. Okay, so this system is being utilized in most of the school now, but it is the story where when these things were not in use, so the students who sit in the last corner were those students who are not very interested in studying, who are not very good at study, who don't score good marks. Okay, and who talks a lot, who are where there is a lot of movement. Okay, especially of feet, and where there is a lot of laughter there. When something funny comes, they make a lot of noise. When they are asked some questions, they fell silent. और ज़मीन पर आपको बहुत सारा मिट्टी वगैरह मिलेगी। तो आम तौर से बैक बेंचर्स जो थे वो इस तरह के होते थे। तो जो वेंडा पेटनॉस्की है वो उन्हीं स्टूडेंट के साथ बैठती थी जो कि रफ थे, जो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते थे, और जो कि जिनके पैरों की आवाज़ें बहुत आती थी जब वो बैठते थे, मतलब वो एक कंसंट्रेट करके नहीं बैठ पाते थे। ओके, जब कोई फनी चीज़ क्लास में होती थी तो वो बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ उन्हीं बेंचेस की तरफ से आती थी। ज़मीन पे बहुत मिट्टी वगैरह दिखती थी। वेंडा ऐसी जगह पर बैठती थी। Now, most of the time what happens that people say that you are recognized by the people around you. आपके आप अपने दोस्तों के आप अपनी सोबत से पहचाने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। सोबत मीन्स आपके साथ में किस तरह के लोग रहते हैं, अपने साथियों से आप पहचाने जाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, है ना? तो अगर हम ये देखें कि वेंडा लास्ट सीट पे बैठती है, इसका मतलब ये है कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करती होगी, है ना? वहाँ पे बात करने वाले बच्चे बैठते हैं तो वेंडा भी बहुत बात करती होगी, वो हंसते हैं बहुत जोर से तो वेंडा भी हंसती होगी, है ना? उस तरह की चीजें जो सब करते हैं वो वेंडा भी करती होगी। दैट इज वाई शी सिट्स एट द लास्ट रो। बट दिस पैराग्राफ सेज वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. वेंडा जो वहां पे बैठती थी वो इसलिए नहीं बैठती थी कि उसको शोर मचाना पसंद था, या उसको मतलब उतना ऑर्गेनाइज वे में जिंदगी गुजारना पसंद नहीं था, या वो क्लास में बहुत अटेंशन नहीं पे करती थी। बल्कि उसका उल्टा ये था कि वो बहुत खामोश रहती थी और बहुत ही कम बोला करती थी। रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, बहुत ही कम ऐसा होता था कि उसके मुंह से कुछ बात निकलते हुए कोई सुनता हो, या वो आपस में किसी स्टूडेंट से बात करती हो। आमतौर से वो खामोश रहती थी। अपोजिट था उन लोगों के जो उसके साथ बैठते थे। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, किसी ने उसको जोर से सुनते हुए तो कभी सुना ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो उसके आसपास के लोग थे उससे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी। उसका हंसना हाँ थोड़ा सा डिफरेंट था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभी जब बहुत जोर से लोग हंसते थे तो उसकी हंसी कैसी होती थी, a little uneven and bigger on one side। एक तरफ का हिस्सा जब आप हंसे और एक तरफ का हिस्सा जो है आपका ज्यादा आ, 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 जो एक्टिव हो, या एक तरफ का हिस्सा जो है आपका ज्यादा खुले, तो उसको हम क्रूप्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल कहते हैं। कि वो स्माइल जो है इंसान पूरी तरफ से नहीं हंसा, अनइवन था, कि उसका हंसना जो है वो ऐसा लग रहा था कि एक तरफ से हंस रहा है जैसे लगता हो। तो समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल। कभी कभी जब बहुत ज्यादा हंसने की बात होती थी तो इस तरह से वो हंसा करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogin's height, and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Patnosky once she sat in the corner of the room. ये पैराग्राफ कहता है कि why Wanda was sitting there, or why Wanda chose to sit there, nobody exactly knew that. But there was one thing you can say that could be the reason of her sitting at the back of the class. And what that could be? The reason can be that her feet were usually caked with dry mud. उसके जो पैर थे उस पे इतनी मिट्टी जमी होती थी कि उसके पैर छुप जाते थे। यूजुअली केक्ड विद
ड्राई मग, उसके पैरों पर जो सूखी हुई मिट्टी थी वो केक की तरह जमी रहती थी उसके पैरों पर। वो क्यों जमी रहती थी? बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट। एक प्लेस था बोगिन्स हाइट, उस जगह से वो आया करती थी, और वहां पे हो सकता है कि रास्ता खराब हो जिसकी वजह से वेंडा जो थी वो पैदल आने की वजह से उसके पैर सब गंदे हो जाते हों और उसको सीधे क्लास में आना पड़ता हो। जैसे आपके पास डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं कि अगर आपके पैर गंदे हो जाए तो जाके वॉशरूम में धुल लीजिए, हो सकता है वो सारी फैसिलिटीज़ उस स्कूल में अवेलेबल ना हो उतनी अच्छी तरह से। तो वो रूम में आती हो, उसके पैर गंदे रहते हो, तो वो ये सोच कर के मैं अगर बीच में या फ्रंट पे बैठूंगी तो पूरी क्लास में गंदगी दिखेगी, तो वो पीछे बैठा करती थी। हो सकता है कि ये रीज़न हो उसके पीछे बैठने का, ये इसके अंदर कहा गया है। लेकिन बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेटनोस्की once she sat in the corner of the room। जब वो क्लास में आती थी तो सबकी अटेंशन उसकी तरफ चली जाती थी, सब उसके पैर देखा करते थे, कितने गंदे पैर हैं इस लड़की के। लेकिन जब वो एक जगह बैठ जाती थी, फिर क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं आती थी, वो दिखाई नहीं देती थी, वो बोलती नहीं थी, फिर लोग उसके बारे में नहीं सोचते थे, उसके बारे में कोई बात नहीं होती थी, कोई उसको घूरता नहीं था, कोई देखता नहीं था उसको। तो वेंडा के बारे में क्लासमेट्स कब सोचते थे? when she in when she entered the room, जब वो क्लास में आती थी तो उसके बारे में लोग सोचा करते थे। ओके, देन द मोमेंट the moment she sit at her seat, nobody cares where she is or what she is doing. Okay, but there was some time when the classmates of Wenda used to think about her. It is about that information. The time when they thought about Wenda was outside of school hours। वो क्लास में जब बैठते थे उसके बारे में तो बात नहीं करते थे, उससे बात नहीं करते थे। At noon time when they were coming back to school, or in the morning early before when school began, okay, when groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to school yards, then sometimes they waited for Wenda। Why? To have fun with her। Have fun means किसी के साथ हंसी मजाक करना। It does not mean have fun means that people together are, they are having fun and they are enjoying the moment। Okay, but making fun means किसी का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर जो है चीज़ें अभी तक लाइट रखी हैं राइटर ने। The time when they thought about Venda was outside of school hours. Outside of school hours means the school hours that were fixed that from 8 to 1 or 8 to 2 p.m. Okay, that is the school hours. So in between these hours, they did not think about Venda. Outside school hours. Okay, outside school hours means before 8 a.m. or after 2 p.m. Or if there is a recess in between, like at 10:30 or 11 there is a recess of 15 minutes, they used to talk about Venda in that free time only, not in the school time। At noon time when they were coming back to school, okay, जब वो स्कूल वापस आ रहे होते थे, मान लीजिए बीच में खाने के लिए लंच वगैरह के लिए ब्रेक मिला, बच्चे घर गए अपने और लंच करके वापस आए। ओके, और इन द मॉर्निंग अर्ली, या फिर जब वो स्कूल शुरू होने का वक्त होता था और वो स्कूल आते थे अर्ली मॉर्निंग, उस वक्त का टाइम हो, और वो किस तरह से व्हेन ग्रुप ऑफ टू और थ्री, जब दो तीन लोग मिलते थे और मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब वो स्कूल आते हुए स्कूल में घूमते फिरते जब बात करते थे कभी, तो वो उसके बारे में सोचते थे, उसके बाद उसका इंतज़ार करते थे। क्यों? ताकि उसके साथ कुछ हंसी मजाक करें। The chapter is started with the information that on Monday, Wenda was not present in the school. Now it is Tuesday, the next day. Okay, the next day, Tuesday, Wenda was not in school either, and nobody noticed her absence again. But on Wednesday, okay, but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down with who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there। So, 2 दिन गुजर जाते हैं, Monday और Tuesday। Nobody noticed her absence in the class। On Monday,
nobody noticed. Neither on Tuesday, nobody noticed. But on Wednesday, there were two girls mentioned in the first line of the chapter, Peggy and Madeline. तो यहाँ पे मैडलिन को मैडी कहा गया है. पैगी और मैडी, इन दोनों ने, जो कि सारा फन इन दोनों ने शुरू किया था, सारा मजाक जो था इस बच्ची के साथ, वेंडा के साथ जो होता था, वो इन दोनों ने शुरू किया था. तो ये पैगी और मैडी जो थी, इन्होंने आखिरकार ये नोटिस किया कि वेंडा जो है वो क्लास में नहीं आई है. पैगी और मैडी किस तरह के स्टूडेंट्स थे? ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे, ये क्लास में फ्रंट रो में बैठा करते थे, और ये बहुत साफ सुथरे रहते थे. इनको देखकर इनके पैरों में मिट्टी नहीं लगी होती थी. ये जिस जगह से आते थे वो जगह वैसी नहीं थी जहाँ पे वेंडा आया करती थी. तो वेंडा लास्ट सीट पे बैठती थी और ये फ्रंट रो में बैठा करते थे. ये लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे. वेंडा जो थी उन लोगों के साथ बैठती थी जो कि अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करते थे. और वेंडा अपने साथ मिट्टी बहुत सी लेकर आती थी. जहाँ से वो आती थी वहाँ मिट्टी बहुत थी, उसके पैरों में मिट्टी लगती थी. जबकि ये ऐसे लोग थे, पैगी और मैडी, कि इनको इनके आसपास गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती थी. Now we are going to study more about Peggy and Maddie. So previously I told you that Peggy and Maddie were the students who sat in the front row, okay, and they scored good marks, and they did not track a lot of mud with them. Now, especially with for Peggy, Peggy was the most popular girl in the school. Peggy जो थी वो स्कूल की one of the most popular girl थी. पॉपुलर होने का क्या मतलब है? सब लोग उसको जानते थे, सब लोग उसकी तारीफ करते थे, सब लोग उससे बात करना चाहते थे. उसके पास कभी दोस्तों की कमी नहीं रहती थी. पॉपुलर होने का मतलब ये है कि लोग जो थे उसके आसपास जमा रहते थे. उसके ऑपोजिट हमारे पास एक कैरेक्टर है वेंडा का, जो कि अकेली रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी. शी वॉज प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत थी. पैगी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके बाद बहुत खूबसूरत खूबसूरत कपड़े भी थे. एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल जो थे वो कर्ली थे. मतलब वो उसके आसपास लोगों का जो जमावड़ा था, उसके जो लोग जो जमा रहते थे, वो हो सकता है कि उसकी खूबसूरती, उसके कपड़े और उसके खूबसूरत बालों की वजह से उसके पास हो. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और उन सारे लोगों में जो उसके आसपास रहते थे उसमें एक थी मैडी, जो कि उसकी सबसे करीबी दोस्त थी. The reason Peggy and Maddie noticed Wenda's absence was because Wenda had made them late to school. जैसा पहले कहा था कि स्टूडेंट्स जो वेंडा से बात करते थे या उससे मजाक करते थे वो आउटसाइड स्कूल आवर्स में करते थे. और उसमें मेंशन हुआ था कि सुबह में स्कूल आने से पहले भी बच्चे वेंडा का इंतजार करते थे कि वो मिल जाए तो उससे मजाक करते हुए चलेंगे. तो वेडनेसडे को मैडी और पैगी ने नोटिस किया कि वेंडा नहीं आई है. तो वो क्यों किया? क्योंकि वो उसकी वजह से स्कूल आने में लेट हो गए थे. दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर, एंड शी जस्ट हैडंट कम. उन लोगों ने खूब इंतज़ार किया, वो इंतज़ार करते रहे, पर वेंडा नहीं आई. और आखिरकार वो स्कूल पहुंचने में लेट हो गया. उन्होंने सोचा था कि वेंडा हमको यहाँ पे मिलती है तो हम साथ में उसके स्कूल जाएंगे मॉर्निंग में और उससे मजाक करते हुए जाएंगे, बट वेंडा नहीं आई. दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेटनॉस्की टू हैव फन विद हर. वो अक्सर उसके पास उसका वेट करते थे वहाँ खड़े होके मॉर्निंग में, ताकि कुछ मजाक करते हुए उससे स्कूल जाएं. तो ये जो था, ये जो फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंडर में जो टेक्स्ट आता है, ये इतना आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया है. So this is it in this video today. Thank you very much everyone for watching the video. If you have any question, any doubt, please leave the comment, and see you soon.